Now, today's chapter is upthrust in fluids, Archimedes principle, and flotation. So that is the topic of the chapter, and we will discuss it in several parts. So the first part, which right now I'm going to discuss over here, that is related to the upthrust, effect characteristics, factors affecting the upthrust. These things we are going to discuss, and then we will understand about the buoyancy, and then we will see for flotation. So in this part, okay, so in today's class I will try to go for all these topics if it is possible. हम लोग इन सारे टॉपिक्स को ही देखेंगे। अपथ्रस्ट किसको कहते हैं, क्या है, इसके इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन सब चीजों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। फिर अपथ्रस्ट को काउज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं, या इनके क्या फैक्टर्स इनकी क्या इफेक्ट्स होती हैं, इन सब चीजों को समझेंगे। फिर हम लोग बॉयंसी को समझेंगे और फिर फ्लोटेशन को समझेंगे। तो वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स तो एक ही क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। धीरे धीरे करके इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो द वेरी बेसिक थिंग or the very first thing which we have to understand about this chapter is upthrust. Upthrust होती क्या चीज है, किसे हम लोग upthrust कहते हैं। So let's understand about upthrust, how we can define upthrust. So in simple language, if we say, then we can say when a body is partially or wholly immersed in a liquid, an upward force acts on it. This upward force is known as upthrust or the buoyant force. तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी तरह के ऑब्जेक्ट हो, जब हम लोग उसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, either it is partially or completely, we are submerging it, then we observe that the object experiences a force through the liquid. वो लिक्विड जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपथ्रस्ट कहते हैं। सो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सच एज फॉर एग्जांपल इफ यू विल टेक अ plastic bottle, let it be its cap be closed over there, and you try to put pressure on that bottle and make that bottle to go under the water. मतलब तुम एक बोतल ले लो, उसमें कैप लगा दो, और फिर तुम उस बोतल को कोशिश करो एक किसी कंटेनर में जिसमें पानी भरी हुई है, तुम उसमें उसको पुश करने की। So if there is a container like this, तो इसमें है, तो इसमें suppose for example ये पानी से भरी हुई है और तुम इसमें एक बोतल को पुश करने की कोशिश करो। So you will observe this thing that as you are trying to push it down, जैसे जैसे तुम इसको नीचे की तरफ पुश करोगे, there is a force which you will experience that it is making it to move up. तुम वहां पर एक्सपीरियंस करोगे कि एक फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश ऑन कर रही है। So the force which you are experiencing over there, that is actually the upthrust. वही है upthrust जो कि ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है। So that is the condition which we need to understand over here about the upthrust. So once again, what is upthrust? Upthrust is the force exerted by any kind of fluid on the object which has been partially or wholly submerged in that liquid. किसी भी liquid के अंदर जब किसी चीज को हम लोग पार्शियली या होली सबमर्ज करते हैं, तो वो जो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, इसे हम लोग एज अ अपथ्रस्ट या बुoyant फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको सिंबलाइज करने के लिए जो हम लोगों के पास तरीका होता है वो होता है FB, where F is the denotation of force and this B is showing that buoyant force or the force exerted by the liquid, whereas its unit will be Newton because it is a force. वो इसकी SI यूनिट जो है वो न्यूटन है, या kgf भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ही है, अल्टीमेटली ये फोर्स है। अपथ्रस्ट या डाउन थ्रस्ट दोनों ही फोर्स होती हैं, बस फर्क ये होता है, दोनों में फर्क ये चीज होता है कि यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर कंडीशन देखते हैं। When the force is either acting perpendicularly in the downward direction or it is acting in the upward direction perpendicularly, then we used to say as thrust. So in that specific situation, when it is acting in the upward direction, it is called to be as upthrust. जब वो ऊपर की तरफ लगती है तो उसे हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, और जब वो नीचे की तरफ लगती है
तब उसे हम लोग डाउन थ्रस्ट कहते हैं। ये बेसिक सी डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं जो कि किसी भी तरह के लिक्विड में अप्लाई हो सकती है। सो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस थिंग that when we partially or wholly submerge any object in a liquid, then the liquid used to exert a force in the upward direction. The force exerted by the liquid in the upward direction is called to be as the upthrust. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में हम लोग डिप करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है थ्रू आउट द लिक्विड, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, जो कि ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द अपथ्रस्ट। Now there is an experiment which I had explained over here, by which you can understand about the buoyant force. So about this experiment and the detailed animation of this experiment, I will provide you with the link in this video only. ये वाली वीडियो के ऊपर में एक आई बटन आएगा, उसमें हम तुम लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम अभी बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, तो तुम लोग उस वीडियो को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से काम करता है, बुoyant फोर्स किस तरह से काम करता है। सो जस्ट नाउ एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ कंटेनर, सपोज एक कंटेनर है और तुमने इसमें पानी भरा हुआ है, सपोज इट हैज वाटर इन इट, ओके। And if you take a bottle, a plastic bottle, एक सपोज मान लो कि तुमने प्लास्टिक बोतल लिया और उस प्लास्टिक बोतल को तुमने इसमें रखकर इसको तुम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन, you will observe or you will experience a force in the upward direction, and that force which you are going to experience, that is actually the buoyant force. Okay, so that is the buoyant force which we are talking about over here. So buoyant force का ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बेसिक सी बात यही है जो अभी हम तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे, but again I will request you that you go through that video and you see that how it has been explained over there. So I will, as I said, that I will provide that link over there in the I button. You just go through that one. Now let's move on and understand some very important thing regarding to this upthrust. So over here we are going to discuss about this characteristic property of this अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है या क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली वी विल सी दैट देयर आर थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अपथ्रस्ट। सो द फर्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, दैट इज लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली इफ वी वांट टू डिफाइन फॉर दिस वन, वी कैन से इफ अ बॉडी व्हिच हैज अ बिगर वॉल्यूम which been immersed in a liquid, it will dislocate or it will displace more liquid as per to its volume. Because of that, it will experience more upthrust. इसको सीधे सीधे समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको समझे इस तरह से कि जब भी किसी भी बॉडी को हम लोग सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, वो जितना ज्यादा वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, वो उतना अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। So this is a very important thing which we had understood a little bit in our previous chapter, as well as we are going to discuss the same thing in this chapter also. So once again, I want to repeat this thing, that the amount of liquid displaced by any body which been submerged in a fluid is equals to the amount of buoyant force experienced by the body. फिर से बता रहे हैं हम ये चीज कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, वो ऑब्जेक्ट या वो सबमर्ज्ड पोर्शन जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतना ही बुoyant फोर्स वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। सो एक सिंपल तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उतना ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जिस भी बॉडी का जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, वो उतने बड़े वॉल्यूम में लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जितने बड़े वॉल्यूम में वो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उतना ज्यादा बुoyant फोर्स या अपथ्रस्ट वो एक्सपीरियंस करने वाला है। So this is the first character of this, or the first characteristics of this upthrust,
So once again, please remember this thing, larger the volume, यानी जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ज्यादा अमाउंट में लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितने ज्यादा अमाउंट में लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा या उतना ही बड़े अमाउंट में वो अपथ्रस्ट को एक्सपीरियंस करेगा. So in a simple word, you can say more the volume of the submerged object will be more in the amount of the displaced liquid, which will be acting as more in the amount of upthrust over there. The action of the upthrust is directly depending on the volume of the liquid displaced by the body. The next thing is that more the density of the fluid, greater the upthrust. जब भी किसी भी लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जिस भी लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वो उतने ज्यादा अमाउंट में अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर सकती है. Now see students, when I am saying this, then you have to understand one very basic thing with this. ये चीज जब हम बताते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है जो हम लोगों को समझने की जरूरत है. जब भी हम लोग बात करते हैं अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, तो फ्लूइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को समझने की जरूरत होती है. As you know that fluid are due to the arrangement of the molecules. जो molecules की arrangement होती है उसके लिए उनको fluids कहा जाता है, because they have space between them. So if I say that a liquid is there or any other fluid is there, then the particles are slightly far away from each other. But among different fluids, the arrangement of the particles will be different. अगर हम लोग अलग अलग फ्लूइड्स में देखते हैं तो जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है. Say as for example, if you take oil and water, both are fluid, both are liquid, but the arrangement of the particles you will find different. In oil compared to water, you will find that the particles are more closer to each other than water over here. So in the water, the particles will be slightly more far away than to oil. And because of that, because of this particular property, you will observe that the oil can exert more upthrust than compared to the water. ठीक है, तो ये चीज समझने की कोशिश करो. जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो ये जो अपथ्रस्ट अप्लाई कर, कोई भी लिक्विड जो ये अपथ्रस्ट अप्लाई करती है, ये अप्लाई करती है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स जितने नजदीक होंगे वो उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जितने ज्यादा नजदीक होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना कम होगा. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर सबमर्ज करना. यानी अगर पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक फॉर एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, so if there is any kind of solid object, you are not able to put anything inside it. Why it is so? It's because the particles are tightly packed with each other. You can't dislocate any of the particles over there. But in a fluid that is possible because particles do have space between them. But different fluids do have different arrangement of the particles. So if the particles are very much close to each other, then we used to observe that they will not be able to, or we will not be able to put any object inside it very easily. So they will exert more upthrust. So you have to understand this basic concept. So thus we say this thing that more the density of the fluid, greater is the upthrust. यानी जितनी ज्यादा density होगी उतना ज्यादा upthrust वहां पर apply होने वाला है. ठीक है? Now the last character which we have to understand over here, that is the upthrust acting on a body is an upward direction at the center of buoyancy. तो देखो इस चीज को, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं in the air, then it has a center of gravity. You can say for now the center of gravity is the midpoint or the center of the body which gets aligned over there, or the symmetrical point which is aligning on the body. उस बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं from both the sides.
Now, when it has been submerged in the liquid, any liquid, it can be water or it can be oil or it can be any other liquid. When it has been submerged, then the upthrust on the body acts in the upward direction of the center of buoyancy. So what does this center of buoyancy means? Center of buoyancy is the center of the fluid which has been displaced by the submerged portion of the object. जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं या सबमर्ज करते हैं, तो जितनी लिक्विड वहां पर डिस्प्लेस होती है, उसका जो मिड पॉइंट होगा या उसका जो अलाइंड या उसका जो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ बुoyancy. And the upward force or the upthrust will be just in the upward direction for this center of buoyancy. And if it is not so, then what will happen? Then the body will be unbalanced. So you can see over here, this is a balanced situation where we are having an equilibrium situation. But if it is not in the proper alignment, then what will happen? The body will either go anti-clockwise or it will go for clockwise, and it will not be in a proper symmetrical form. वो proper stable situation में नहीं होगा, वो tilt कर जाएगा, वो या तो एंटी क्लॉकवाइज में टिल्ट कर जाएगा या तो वो क्लॉकवाइज में टिल्ट कर जाएगा, जहां पर कि उसे हम लोग अनबैलेंस्ड कंडीशन बताएंगे. So if water is very much unbalanced, then the ships can be like this. Or in a stable water, we will have an equilibrium condition where the upthrust used to act in the upward direction, which is aligned with the center of gravity, with the center of buoyancy, thus makes the body stable over there. Okay, so this is little bit complicated for now. ये वाली जो थर्ड वाली पॉइंट है, ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे समझेंगे, वहां पे हम लोग कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन अ डिटेल्ड फॉर्म वी विल डिस्कस इट इन क्लास 11th. तो क्लास 11th के फिजिक्स में इसको और ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम करता है या फिर किस तरह से इसकी कंडीशंस होती है. ओके, सो टिल हियर इज देयर एनी डाउट? डू एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? Anyone? Whatever we had discussed till now, is there any problem? You can share if there is any doubt or any problem or anything if you haven't understood, or if anything you want me to repeat. Is there anything? No or yes? Okay, no, nothing. So then let's move to the next topic. So we will understand about the factors affecting the upthrust. So what are the various factors which used to affect the upthrust? Upthrust किन basic से factors के ऊपर depend करता है. Now see students, when we talk about upthrust, as I had said earlier, that upthrust is the buoyant force, and we had already understood about buoyant force in our previous chapter. So the factors which we will call for the upthrust or responsible for the upthrust, it will be responsible for the buoyant force also. So they are not different things. Okay, so let's see and understand for those factors. So the first factor would be the volume of the body submerged in the liquid. तो पहला फैक्टर जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है वो है क्या, कि the volume of the object which has been submerged in the liquid. किसी भी लिक्विड में जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग सबमर्ज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, इसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि अपथ्रस्ट वहां पर कितना अप्लाई हो सकता है या कितना अप्लाई होगा. इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंटेनर which is filled with water. Okay, so just a minute, let me fill it with water. Okay, so this is the container which has been filled with water. Now if you will have two different objects and they have different in size. Okay, one you take a little bit small and one you take a little bit big. Okay, so say as for example this is the small one, cube only I will say. Okay, so cube is there, one is the small cube and one would be a little bit big. Okay, so this one is the bigger one. Now if you will dip these two objects separately in this fluid, then you will observe that they will displace different amount of water.
Okay, and remember this thing that the displacement of the liquid is depending on the volume. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, या फिर सबमर्ज्ड पोर्शन के बराबर के वॉल्यूम को लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको तुम लोग समझ सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ बकेट ऑफ वाटर and you dip your hand inside it, then how much water you had displaced? You had displaced equal amount of water as per to your own hand. तुम्हारे हाथ के बराबर के वॉल्यूम के लिक्विड को तुमने वहां पे डिस्प्लेस किया है, ये चीज वहां पर आती है। ठीक उसी तरह से जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड को वहां पर डिस्प्लेस करती है। तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का, वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही बॉयंट फोर्स वहां पर अप्लाई होने वाला है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which you have to understand. Okay, so thus we used to observe, or we used to say this thing, that the volume is one of the very important factor which affects the amount of buoyant force which used to act over there. The next thing is that the density of the liquid, the liquid which we are using, how dense it is. Okay, so because on the basis of that also we will understand that how much upthrust is going to be applied from the liquid, because that upthrust is actually a kind of a resisting force, and that resisting force used to come from the density of the liquid. तो लिक्विड जितनी ज्यादा डेंस होगी, वो उतनी ज्यादा रेसिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगी, और वही रेसिस्टिंग फोर्स हम लोगों के लिए यहाँ पर अपथ्रस्ट बन जाएगा। जैसे कि हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि इफ द पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, देन वी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट इट इज हार्ड फॉर अस टू मेक एनी ऑब्जेक्ट टू सबमर्ज्ड इन द लिक्विड. So why it is so? It is because the particles do have more intermolecular attraction force. Due to that, it becomes very hard for us to make them separate from one particular place to another particular place. So this is the second important factor. So the first one is the volume, and the second thing is the density of the liquid. So that as more and more density is there, we will observe more and more buoyant forces acting over there. The next thing is that when we are talking about these two things, then we come for, or then we will understand for the amount of the calculation of the upthrust. So अब हम लोग यहाँ पर अगर upthrust की calculation को करेंगे, तो हम लोग इसको कैसे identify कर सकते हैं या कैसे इसको explain कर सकते हैं? So the amount of upthrust is equals to the amount of the buoyant force, which will be ultimately the product of the volume of the submerged body, or the amount of the liquid displaced with the product of the density of the liquid. Okay, so volume of the body, यानी जितना उस body का volume है into the density of the liquid or the fluid which we are using over there. So these two things will give us the amount of upthrust or the buoyant force which is going to be applied, or which is going to be act on the object which has been submerged in the liquid. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, तो वो उतना buoyant फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि इक्वल होगा उस बॉडी के खुद के वॉल्यूम के और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के प्रोडक्ट से। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, उन दोनों के वो इक्वल होगा। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि तुम लोग करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना buoyant फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिचुएशन. So say as for example, there is a cylindrical body which has been submerged in the liquid, and the liquid is exerting an upward force. ठीक है, ये लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, अपथ्रस्ट एक्सर्ट करने वाली है. Now over here, say as the cross section area, we take it as A, and the height of the object, take it as to be as H. Okay, it has been
submerged in the liquid where the density of the fluid is rho. Under that situation, what would be the total buoyant force? जैसा कि हम लोगों ने buoyant force पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, buoyant force हम लोग एक्चुअल में कहते हैं या total buoyant force हम लोग कहते हैं the difference of the force acting at the base with the force acting at the top, means force of buoyancy we can say to as F2 minus F1. ठीक है, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे हम लोगों को कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कैसे, किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। सो F2, how we can calculate this F2? Now as we know, this pressure is equals to force upon area. Okay, so therefore force is equals to pressure into area. Okay, so over here we can say this thing, that pressure 2 into area minus pressure 1 into area 1. Now if you will solve for this one, if you will go just simplification of this one, so pressure, which pressure we are talking about? We are talking about the liquid pressure, and liquid pressure's formula we all know about. It is H rho G, so it would be H2 rho density into G into A, minus over here it would be H1 into density into G into A2, sorry, A1. Now, if you are solving for these things, if you will solve for this one, you can bring this rho G A as common, and this one would be H2 minus H1. Okay, so with this simplification, when you are simplifying for this one, what you are going to, what we will get from this one, so you can write it like this: A into H2 minus H1 into rho into G, and the product of area into the difference of this one, that is A into height into rho into G. The product of this one will be equals to volume. Okay, because you know mathematically what it used to have. So here when you are going to simplify for this one, you will go for volume into density into acceleration due to gravity. So ultimately what you had got for the buoyant force is equals to volume into density of the fluid into the acceleration due to gravity. So when you are solving for this one, you will be able to calculate out the amount of buoyant force which is exerted by the fluid on this container which has been submerged in it. Okay, so I hope that you all are understanding. If there is any doubt, you are free to ask. Yes, students, यहाँ तक देखो, यहाँ तक अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो. Yes, Prithvi. Yes. Sir, F2 is only the buoyant force. Pardon, I'm not able to understand. Your voice is not so very clear. Sir, F2 is Okay, okay. F2 is what? See, जब देखो, जब हम लोग किसी कंटेनर में जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरी हुई है, और जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर सबमर्ज करते हैं, जब हम लोग उसके अंदर डुबोते हैं, तो जो लिक्विड ऊपर की तरफ है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और जो लिक्विड उसके आसपास है वो भी कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, और जो लिक्विड उसके नीचे में है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है. So from all the direction the submerged body experiences a force, but we don't consider the force which is acting from the surrounding, because that is all in all around, it is in an equal amount. What actually changes the amount of force at the top and the amount of force at the bottom. That's why if you remember, we had studied in the previous chapter, when you take any object deeper and deeper, you observe that it experiences more and more pressure. So with the depth, pressure increases. So over here we are actually taking that one. जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज किए हैं, तो ऊपर से कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे से कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. And this force is much greater than this F1.
This F2 is much greater than this F1 because it is acting in the downward direction, in the upward direction, and has a capability to make this object move up. So that's why we are calculating over here. Is it clear? Okay. Okay. Any other doubt? Any other doubt? यहाँ तक में कहीं पे कुछ भी problem है, because I can understand it is a little bit twisted. It's not so very easy, but if you will try to understand, you can, because I want to discuss till this topic today. If there is any doubt, any problem, anything you want to ask, then you can say. Otherwise, I will go for those 2 points which I had made as the note. No? Okay. So let's see for these 2 points. Yes, Laiba, do you want to say something? Or Sania? Sir, that's third point. Third point, pardon, which third point? The previous. Sir, F8 is equal to H2 rho G. ओके सी देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर F2 माइनस F1 करते हैं, ठीक है, F2 माइनस F1 करते हैं, तो F2 का अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखो अगर हम लोग F2 का कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या होगा, प्रेशर 2 इंटू एरिया 2, ठीक है, और प्रेशर का जो कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे लिक्विड प्रेशर है, सो लिक्विड प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, H रो G, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इनटू एरिया 2, ये हो गया मेरे F2 का कैलकुलेशन। ठीक इसी तरह से हम लोग F1 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, F1 इज इक्वल्स टू प्रेशर 1 इनटू एरिया 1। तो प्रेशर 1 को हम लोग यहाँ पे फिर से फ्लूइड प्रेशर, तो ये H1 रो G, ये हो गया लिक्विड प्रेशर इनटू एरिया 1। अब यहां पर अगर हम लोग बॉइंट फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं F2 माइनस F1, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज H2 रो G इनटू एरिया 1 माइनस H1 रो G इनटू एरिया 2। नाउ ओवर हियर एज दिस ऑब्जेक्ट इज सेम, ये ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसका ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा उसके नीचे के क्रॉस सेक्शनल एरिया के, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, रो G और A को कॉमन निकाल लेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, H2 माइनस H1। Now, when you will simplify this H2 minus H1, ये जो H2 minus H1 करोगे, so what you will get? You will get the actual height of the object. So you can write rho into G into area into height of the object. Now, according to the maths, हम लोग maths में ये पढ़ चुके हैं कि volume is equals to area into height. ये होता है volume का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर एरिया और यहाँ पर ये H हाइट आ गया, तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, रो इनटू G इनटू वॉल्यूम। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, द buoyant force is equals to the product of the volume of the object with the density of the liquid into acceleration due to gravity. So this is actually the calculation which we want to discuss. Is it clear now? Yes, sir. Okay. Yes, Laiva, do you want to ask something? सर F2 और F1 को माइनस कर बॉयंट फोर्स कैसे निकलेगा? ओके, देखो बॉयंट फोर्स कैसे निकलेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। देखो, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं एक लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड तो चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, कुछ फोर्स ऊपर से लग रहा है, कुछ फोर्स साइड से लग रहा है, कुछ फोर्स नीचे से लग रहा है। तो जो फोर्स साइड से लग रहा है हम लोग उसको अभी नेग्लिजिबल करके चलते हैं,
उसको हम अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि साइड से जो फोर्स लग रही है वो तो चारों तरफ से इक्वल अमाउंट की फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और नीचे से जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ये दो अलग अलग अमाउंट की फोर्स है। यहां पर हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि नीचे डेप्थ ज्यादा है, जिसके कारण यहां से लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, और ऊपर में डेप्थ कम है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो यहां से लगने वाला फोर्स भी कम होगा। तो टोटल बॉइंट फोर्स जो होगा वो होगा इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड दैट इफेक्टिव फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ F2 minus F1. ओके Yes, sir. Okay, again I will continue this same topic from tomorrow in tomorrow's class, as our timing is just going to finish it out in any second. So our class will end up, but tomorrow again I will start from this topic. But before that, you please revise and find out if there is any problem. Okay, कोई भी problem होगी उसको please find out करके रखना, ताकि हम लोग कल के क्लास में इसको डिस्कस कर सकें।